Hello students, I am your science teacher. Students, we will start lesson 4 of science, materials, metals and non-metals. Materials, metals and non-metals. If we look around us, we can see a large number of materials or things of different shapes, sizes and textures. We know that बेटा हम जब अपने चारों साइड देखते हैं तो हम एक बड़ी संख्या में मटेरियल्स देखते हैं जो कि विभिन्न शेप और साइज के होते हैं. anything which occupies space and has mass is called matter. For example, chair, eraser, bucket, shirt, spoon, car, train and shoe. We can divide matter into pure substances, element and compound and mixture. Element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical methods of applying heat, light, and electric energy. Iron, oxygen, magnesium, etc. are examples of elements. Elements can be classified into metals, non-metals, and metalloids. बेटा हम जो एलिमेंट्स जो भी होते हैं इनको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलोडियस 3 पार्ट में जो डिवाइड कर सकते हैं देयर फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. तो इनमें फर्स्ट में आता है हमारा मेटल. Depending upon their physical and chemical properties, metals, iron, copper, tin, gold, etc. are metals. In general, metals are hard and shiny in appearance. Non-metals, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, etc. are non-metals. In general, they are not so hard. Most of them have dull appearance. Metalloids. Some elements have certain properties of metals and some properties of non-metals. These are known as metalloids. मेटलॉइड्स होते हैं बेटा जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज गुण तो मेटल्स के होते हैं और कुछ गुण जो होते हैं नॉन मेटल्स के होते हैं. Zinc, antimony, silicon and germanium are some examples of metalloids, occurrence of metals and non-metals. The Earth's crust is the main source of metals and some non-metals. हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ये जो हमें इनके सोर्स क्या होते हैं हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है सतह है वहाँ से उसके नीचे से ही हमें प्राप्त होते हैं. All the rocks contain some metallic minerals. Those minerals from which metals can be extracted conveniently and profitably are called ores. In the ores, certain impurities are present along with metallic minerals. These तो ये जो मिनरल्स होते हैं जो हमें जो अर्थ की क्रस्ट होती है वहाँ से मिलते हैं ये मेटल्स होते हैं हमें कन्वेंशनली एंड हमें कुछ अनप्योरिटीज के साथ मिलते हैं. ये शुद्ध रूप में नहीं मिलते अशुद्ध रूप में मिलते हैं. तो ये औराज के रूप में मिलते हैं हमें वहाँ पर जहाँ पर कि इनके साथ जो कुछ इम्प्योरिटीज जो है इनके साथ होती है. impurities are called gangue. In the Earth's crust, metals are found in their combined states as minerals or in free states. The occurrence of metals depends on the nature of the metals and their reactivities. For example, iron, copper, etc. and gold, platinum, etc. are found in free state. Non-metals exist in the Earth's crust in combined state as oxides, carbonates, phosphates, etc. Some non-metals exist in free as well as in combined states. For example, oxygen occurs in the free state in the atmosphere. Oxygen is also present in the combined state in water. Noble gases exist only in free state. A few metals like sodium, potassium, and calcium are also found in seawater. Iodine is a non-metal found in seawater. The series of processes carried out to extract pure metals from their ores is called metallurgy. Some important ores are bauxite, Al2O3, 2H2O, iron pyrites, FeS2, hematite, Fe2O3, 2H2O, and copper glance, Cu2S. Physical properties of metals and non-metal. उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. हम कुछ इसके जो फिजिकल भौतिक गुण होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के. Physical state. Most of the metals are solids at room temperature. Mercury is the only metal known to occur in liquid state in nature. मोस्ट जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे. इनके अंदर सिर्फ मरकरी एक ओनली ऐसा मेटल्स होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. Non-metals are generally solids or gases. Non-metals like sulfur, phosphorus, carbon are solids. Non-metals like hydrogen, oxygen,
nitrogen are gaseous. Malleability and brittleness. The property which allows the metals to be hammered into thin sheets or foils is called malleability. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैलेबिलिटी ऑफ एंड ब्राइटनेस। मैलेबिलिटी होती है कि वह मेटल्स का वह गुण जिसको कि हम इनको अगर किसी हथौड़े से अगर उसको पीटा जाए तो उसकी थिन शीट में चेंज होता रहता है, ना कि वो टूटता है। तो यह जो गुण उसका होता है, प्रॉपर्टीज होती है, मैलेबिलिटी होती है। Most of the metals are malleable. Gold, silver, aluminum, and copper are highly malleable metals. Because of this property of metals, they are very useful to us. For example, aluminum foils are widely used for safe packing of foodstuffs, medicines, chocolates, etc. However, zinc metal breaks into pieces on hammering. So, zinc is brittle in nature. Non-metals are non-malleable as they cannot be beaten into thin sheets on hammering. Rather, they break up into small pieces. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो होता है मैलेबिलिटी का जो गुण होता है वो नहीं होते, नॉन मैलेटेबल होते हैं, यानी कि अगर इनको किसी चीज़ से पीटा जाए तो ये टूट जाते हैं। The property due to which non-metals, if in solid state, break up into pieces on hammering is called brittleness. Non-metals are generally brittle. For example, sulfur and coal break up into small pieces on hammering, but some non-metals, such as hydrogen H and oxygen O, in gaseous state and bromine Br in liquid state, do not show the property of brittleness. And brittleness. Activity 1. To show that metals are malleable and non-metals are brittle. Things needed. Small pieces of aluminium, copper, iron, coal, pencil lead, sulfur, a block of iron, and a hammer. Method. We take a piece of aluminium metal, place it on a block of iron and beat it. With a hammer, we must take care that we do not hurt our fingers while hammering. We find that the piece of aluminium metal turns into a thin aluminium sheet without breaking at all. Similarly, we observe copper and iron also flatten due to hammering and turn into thin sheets without breaking at all. However, the coal piece, pencil lead, and sulfur piece broke into smaller pieces and then formed powder when beaten with a hammer. Conclusion. Metals like aluminium, copper, and iron can be turned into sheets without breaking when beaten with a hammer. Metals are said to be malleable, whereas non-metals like coal, pencil lead, both are forms of carbon. Sulfur are turned into powder when beaten with a hammer. तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, उनको जब हम हैमर्ड करते हैं, उनको जब हम पीटते हैं तो वे जो है एक तरह से सीट में चेंज हो जाते हैं, न कि टूटते हैं, तो वे मैलेबल होते हैं। इसके बजाय जो नॉन मेटल चीज़ें होती हैं जैसे कोल, पेंसिल, लीड, इनको जब हैमर्ड किया जाता है तो ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। Non-metals are said to be brittle. Ductility. Most of the metals can be drawn or stretched into thin wires. The property which allows the metals to be drawn into wires is called ductility. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होती है कि वह किसी भी मतलब मेटल्स का गुण जिसके अंदर कि इनको वायर के अंदर जो है चेंज किया जा सके मेटल्स को, और डक्टिलिटी होती है जो कि मेटल्स में होती है। Gold and silver are among the best ductile metals. Copper, aluminum, iron, and magnesium metals can easily be drawn into thin wires, so they are very ductile. The wires inside the electric cables are mostly made of copper metal. Tungsten is used for making the filament of bulb. Non-metals are not ductile. When stretched, non-metals like sulfur and phosphorus break into pieces and do not form wires. जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, क्योंकि जब इनको हम एक तरह से स्ट्रेच करते हैं, इनको खींचते हैं, तो नॉन जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, तो ये ब्रेक इनटू पीसेज में हो जाते हैं, ना कि वायर में चेंज होते हैं। Luster. Most of the metals are lustrous, that is, they have a shiny surface. This property is called metallic luster. The shiny surface of पॉइंट है लस्टर। तो इसके अंदर क्या होता है, वे शाइनी, इनकी जो सरफेस होती है मेटल की वो शाइनी सरफेस होती है, तो यह प्रॉपर्टी इनकी मेटेलिक
लस्टर होती है। Metals makes them good reflectors of light. Because of their metallic luster, gold, Au, silver, Ag, and platinum, Pt, metals are used for making jewelry and decorative articles. The glass mirrors have a thin coating of metal like silver or aluminum at their back, which acts as a reflector of light. Non-metals cannot be polished like metals. They are dull in appearance. Conductivity जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वे उनके अंदर जो शाइनी अपीयरेंस होता है वो नहीं होता, इनके चमकदार नहीं होते हैं। of heat. Metals are good conductors of heat, whereas non-metals are poor conductors of heat. For example, silver. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, यानी कि उनके अंदर जो हीट होती है ताप वो ज़्यादा पास होता है, जबकि मेटल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। Is the best conductor of heat, followed by copper. Aluminum and iron are also good conductors of heat. For this reason, metals like aluminum, iron and copper are used for making utensils and water boilers. However, bismuth is a poor conductor of heat. Non-metals are poor conductors of heat. Diamond, a form of carbon, is the only non-metal which is a good conductor of heat. Hardness. Metals are generally hard. For example, iron metal is very hard and strong. नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस, यानी कि मेटल जो होते हैं वो सामान्य रूप से हार्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आयरन मेटल जो होता है वह वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। So iron metal in the form of steel is used in the construction of bridges, railway lines, machines, etc. However, sodium and potassium are soft metals and can easily be cut with a knife. Non-metals are not hard or strong. जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। Metals have high densities, but sodium and potassium have low densities. Non-metals have low densities and are very soft, but diamond has high density. Conductors of electricity. All metals are good conductors of electricity. Silver metal is. नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं ये और इलेक्ट्रिसिटी के भी। The best conductor of electricity. Copper wires are used in household electric wiring, and aluminum wires are used in electric cables because copper and aluminum are good conductors of electricity. Non-metals are poor conductors of electricity. For example, sulfur and phosphorus are non-metals and they do not conduct electricity. However, graphite is a non-metal which is a very good conductor of electricity. Tensile strength. Metals usually have high tensile strength. The property which allows a substance to bear a lot of strain without breaking is called tensile strength. For example, iron can bear a lot of strain without breaking. Thus, it is used in construction of bridges. However, zinc has low tensile strength. Non-metals have low tensile strength, so they break easily. However, carbon fiber has high tensile strength. नेक्स्ट पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके अंदर क्या होता है कि जो इस मेटल्स का वह गुण जिसके अंदर की है बियर ए लोट ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बिना टूटे हुए ये एक लोट ऑफ जो वजन होता है वेट उसको उठा सकते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जबकि नॉन मेटल्स में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। Conductivity of electricity. To show that metals are good conductors of electricity and non-metals are poor conductors of electricity. Things needed: an electric cell, an electric bulb, a key, connecting wires, copper piece, aluminium piece, iron nail, coal piece, sulfur piece. Method: we make an electric tester by connecting a cell, an electric bulb, a key, and connecting wires to test whether electricity can pass through an object or not. We connect an iron nail in the circuit. We will notice that electric bulb glows. We will notice that the electric bulb
also glows in case of materials made of aluminium and copper. We connect a coal piece in the circuit. We notice that the electric bulb does not glow. Similarly, the bulb does not glow in case of sulfur also. Conclusion: metals like iron, copper, and aluminium are good conductors of electricity. Non-metals like coal and sulfur are poor conductors of electricity. तो बेटा इस एक्टिविटी से हमें कंक्लूजन निकलता है कि मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कोल, सल्फर आर ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. All the metals are good conductors of electricity. Silver metal is the best conductor of electricity. Sonority. When you push a wind chime, it produces a sound. When the metal pipes in a wind chime strike each other, they produce a ringing sound. The property of producing a ringing sound by metals when they are struck with a hard material is called sonority. Thus, metals are sonorous. तो मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जो कि एक तरह से एक रिंगी साउंड प्रोडक्टिंग करती है, यानी कि जब मेटल को किसी हार्ड मटेरियल से टकराया जाता है, उनकी टकराहट होती है तो उनसे रिंगिंग साउंड निकलती है जिसको कि सोनोरिटी कहते हैं. For this reason, metals are used for making bells. Metal wires or strings are used in musical instruments. Non-metals do not make a ringing sound when we strike them. Thus, non-metals are non-sonorous. Melting and boiling points. Metals generally have high melting and boiling points. For example, iron metal has a melting point of 1535 degrees Celsius. नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि मेटल जो होती है वो जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है. एग्जांपल के तौर पर आयरन मेटल जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होता है. Moisture or a chemical on their surface is called corrosion. When an iron object in damp air or moisture for a considerable time, it gets covered with a reddish-brown flaky substance. This is called rusting. When a copper object remains in damp air for a long time, it corrosion of metals. इस प्रोसेस के अंदर बेटा मेटल जो होते हैं वो इटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स के साथ जब वो एक्शन करते हैं तो एक तरह से उन जो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं. यह जो प्रोसेस होती है वो इरोजन्स होती है. जैसे आपने आयरन के ऊपर देखा होगा, आयरन जब नमी के संपर्क में आता है और जब धूप में एयर के संपर्क में आता है नमी के साथ तो उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है. Slowly with carbon dioxide and water of air, it loses its shine due to formation of a green coating of copper hydroxide and copper carbonate on the surface of the object. Copper plus oxygen plus water plus carbon dioxide, moist air, reacts. Copper hydroxide plus copper carbonate, green coating on object. When silver objects are kept in air, they get tarnished and gradually turn black due to the formation of a thin silver sulfide layer on their surface by the action of hydrogen sulfide present in the air. Prevention of corrosion can be prevented by preventing their contact with air and water. It can be done as follows. Oil, grease or paint is applied on the surface because it keeps the metal away from air and moisture. A layer. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन्स. तो कोरोजन से हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो स्टार्टिंग में हमें जो हमारे जो मेटल होते हैं उसके ऊपर ऑयल, ग्रीस या पेंट है जो वो अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी जो सरफेस होती है वो एयर और मॉइस्चराइज के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है. Of zinc is deposited on the metal surface of iron object by dipping it in molten zinc. This process is known as galvanization. दूसरा, हमें जो जिंक की एक लेयर होती है उसको जो हमारे मेटल होती है उसको सरफेस होती है उसके अंदर डिपॉजिट कर देना चाहिए. आयरन ऑब्जेक्ट जो आयरन जो चीज़ होती है उसके सरफेस को जिंक के लेयर के अंदर डिपॉजिट कर देना चाहिए, जिससे कि यह प्रोसेस जो होती है गैल्वेनाइजेशन होती है. A layer of another metal is deposited on the surface of metal object by the process of electroplating. Alloys. इसके अंदर हमें जो मेटल्स होता है उसके एक अनदर मेटल की जो लेयर्स होती है उसको हम दूसरे जो मेटल जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसके अंदर जो है
डिप कर देते हैं। Alloys are generally hard. For example, carbon